کریں گے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے آرٹس پہ بات کریں گے جی. ایسے ہمارے نوجوان، ہمارے اسٹوڈنٹس جو کہ باہر جانے کی خواہش رکھتے ہیں، خواہش مند ہیں، اور یہ آرٹس بیسیکلی یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ کیوں لازمی قرار دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، کس حد تک لازمی ہے آرٹس کرنا، اور جب آرٹس کرنے والے ہمارے جتنے بھی بچے ہیں، بچیاں ہیں، ایسی کون کون سی ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ ٹیسٹ پاس کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. بار بار اٹیمپٹس کرتے ہیں، پھر جا کر کے کہیں یہ ہوتا ہے، اور یہ بہت لازمی بھی ہے. ظاہر ہے اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے، یا پھر آپ جاب کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ کا جو ویزا ہے وہ اوتھینٹک ہو جاتا ہے. تو آرٹس پہ بات کریں گے جی، غلطیاں جن سے ہمیں بچنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ سید صفدر عباس نقوی ہیں، جو کہ بورڈ آف ممبر آف UNDP ہیں، اور ابھی یہ عارفہ کریم ٹاور میں انگلش ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل انگلش ٹیسٹ کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں، اور مختلف ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں جن کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. تو جی صفدر عباس نقوی صاحب، آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں آپ کو. اچھا، سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ چیز بھی ایڈ کر دوں، ہمارے یہاں ہم ظاہر ہے ہماری جو مدر ٹنگ ہے ویسے تو پنجابی ہے، ہم ظاہر لاہور سے بلانگ کرتے ہیں، پنجاب سے، پھر ہماری اردو ہے، قومی زبان ہے، لیکن سوسائٹی کا المیہ یہ ہے صفدر صاحب کہ جو جتنی زیادہ انگلش بولے گا نا، وہ ایک جیسچر اپنی طرف سے یہ دے گا، یا وہ سوسائٹی میں ہمارے یہ کانسیپٹ ہے ایک کہ وہ اتنا ہی زیادہ پڑھا لکھا کنسیڈر کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کانسیپٹ کے ساتھ ہمارے جتنے بھی بچے ہیں، نوجوان بچیاں ہیں، انگلش بولتے ہیں، اچھی بات ہے، بولنا چاہیے، آپ کو زندگی کے ساتھ چلنا چاہیے جدت کے ساتھ، لیکن بہت زیادہ غلط. ٹھیک ہے، تو آرٹس پہ ہم چونکہ بات کر رہے ہیں، پھر بہت زیادہ آپ کو اٹیمپٹس کرنی پڑتی ہیں آرٹس کو کلیئر کرنے کے لیے، آرٹس کمپلیٹ کرنے کے لیے. یہ کتنا مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے، کیوں مشکل ہے یہ ہم لوگوں کے لیے؟ Well, honestly saying, like, اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ it's like a difficult test, so it's not actually a difficult test. اچھا. We lack practice. We lack actual true practice. ہمارے یہاں dilemma یہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ we lack professional teachers. Basically, when you see, when a person, he does his bachelor's or master's, so he stopped teaching language. تو اس کو پڑھانے لگ جاتے ہیں فوراً. So I must say they need to be professionally trained for that, because they must know what tactics and techniques that they have to use to teach language. Because ہمارے یہاں تو بہت conventional way ہے, we are teaching English as a subject, not as a language. That is another problem that we are facing. اور اگر آپ بات کریں انگلش کی, as you said earlier, it is considered to be a status symbol. So somehow it's true, it's fact. Actually ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ when you speak in Urdu or maybe Punjabi language, تو آپ بہت limited way میں کام کر سکتے ہیں, اپنی سوسائٹی کے لیے صرف کام کر پاتے ہیں. So when you learn a language, especially English language, so it's a lingua franca, right? It's a language of a trade, business, and in communication now. So when you have to work internationally, or when you have to work with multinational organization, so it's a need actually. It's a need of era. And we cannot deny that. Certainly we cannot deny this. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں بیسک پرابلم انگلش نہیں ہے. بیسک پرابلم جو ان کو پڑھا رہے ہیں, they are the actual problem. I always watch different kinds of videos, and they're so funny sometimes because those who are teaching language, they themselves have no idea about language. تو وہ اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھا رہے ہوتے ہیں. یا پھر ہمارے اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں وہ اس کو مجبوری کے طور پہ کہ بھائی ہم نے باہر جانا ہے, باہر جانا ضروری ہے, تو اس کے لیے آرٹس ظاہر ہے وہ and let me tell you, learning any foreign language, because English is somehow a foreign language for us. So learning any foreign language can be frustrating experience, or it can be boring sometimes. So it is up to a teacher that how does he deliver, how does he engage his students in the classroom. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں ٹیچرس کو بھی جو ہے they must accolade their students and their efforts. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ people laugh at you, they will jibe at you if you'll try to speak English in front of them. آپ بولنے کی کوشش کرتے مذاق اڑاتے ہیں آپ کا. یہ ہماری سوسائٹی میں بہت برا چیز ہے. And when you talk about even in institutions,
people don't like to speak in English, although they are, उनका curriculum जो है it's in English, right? और हमारे यहाँ English तो बहुत basic level से start कर देते हैं, ठीक है? अब तो हमारे यहाँ बल्कि बच्चों को I have seen in lots of schools that they don't prefer to teach them Urdu. वो भी you know ABC से start कर रहे होते हैं, but they don't tell them exactly how to use a language. ठीक है. हमारे ये बहुत मसले हैं, and I'm working as HOD at PNY Tarfa Kareem Tower, और I've been teaching English for more than 20 years. जबरदस्त. Yeah, क्या बहुत यंग एज में कब शुरू किया था? I started 20 साल हो भी गए. yes, indeed. I started my career when I was 15. Okay. And that was a coincidence actually. I was speaking English with someone over the phone, और वहाँ पे जो एक virtual university के campus के director थे, he saw me there and he said, your English is very good, you will be a good teacher. तो मुझे कहते कि what are you doing nowadays? So I said, I'm just in a 9th class. मैं तो अभी 9th class में हूँ. They said, यार we are looking for a teacher. हमारे पहले GC यूनिवर्सिटी के टीचर पढ़ा रहे थे, but the problem is कि he got a heart attack. And we had to abandon these programs. So what if you can join? So I joined them. स्कूल में आपके इंग्लिश ज़्यादा नहीं थी, ऐसा नहीं था. घर में मॉम डैड घर का माहौल ऐसा था, क्योंकि हमारे घरों में अक्सर बहुत कम होता है ना कि हम इंग्लिश में अपने बच्चों से बात करें. अच्छा, I was very passionate. My father was a very learned man, and I was really passionate about language. Although I had my schooling in government schools. Oh. Yes, I studied throughout in government schools and institutions. Really? Yes, but I must say, जैसे आपने भी बोला, कि मुझे लगता है कि किसी चीज़ को सीखने के लिए you need to have a fervor. आपके अंदर एक passion होना चाहिए. And I wanted to be a language teacher, and this is what I am today. So मुझे लगता है कि अगर आप अपने profession को अपना passion बना लेते हैं, तो आप उससे ना सिर्फ बल्कि अर्न कर पाते हैं, बल्कि आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं. And even I'm learning. ठीक है. Every time I'm अच्छा, learning. स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादा आते हैं आर्ट्स करने के लिए, या फिर प्रोफेशनल जो लोग हैं, जैसे कुछ वर्किंग ऑलरेडी कुछ जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी आते हैं आपके पास? हमारे पास माशाल्लाह we have numerous students. We have different classes. हमारे different cohorts चलते हैं. यंगस्टर्स ज़्यादा? जी, youngsters भी हैं. Let me amaze you कि हमारे यहाँ क्योंकि we teach IELTS, तो हम लोग ये करते हैं कि we are affiliated center by IDP and by AEO, Australian Education Office, और IDP इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम से भी एफिलिएटेड हमारा सेंटर है. तो हमारे पास कभी कभी, जैसे अभी रिसेंटली हमारे पास 58 years old एक विमेन आए थे, और उनका वर्क वीज़ा था. And she just finished her primary maybe in 90-85 somewhere. I don't know exactly. Okay. तो मैं तो, लेकिन हम ये करते हैं कि we always try to encourage the student. आप देखें, मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम ये है कि हम encourage नहीं करते. अगर एक बच्चा जो है, अब आप उसे encourage करते हैं कि वो एक दो वर्ड भी बोलता है क्लास में, तो after some time he will be speaking, you know, maybe phrases, and later on he might be using sentences in his language. So we need to encourage and appreciate. हमारे यहाँ वो environment ज़रा कम मिलता है. ठीक है. चाहे वो हमारे यहाँ institution में क्यों ना हो, लेकिन जब हम जाते हैं for job purpose, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखें we have to interact in English. हमें वहाँ पे इंग्लिश ही यूज़ करनी पड़ती है. और फिर जब वो हमारा लैंग्वेजेस हमारे सीवी के ऊपर हमने अपने प्रोफाइल पे मेंशन करना होता है, तो उसमें इंग्लिश सबसे पहले लिखा हुआ होता है. अब अपनी है ना कौमी ज़ुबान बाद में होती है, पहले इंग्लिश यूँ हम. और मैं चाहे आपको आ रही है, चाहे नहीं आती है, आपके बोलने में, पढ़ने में, लिखने में कैसे भी है, लेकिन लिखा हुआ. आप अपनी करिकुलम YT के ऊपर जब ये लिखते हैं कि I'm proficient in English, so we expect a lot from you. तो जब वो आते हैं माशाल्लाह और बोलना शुरू करते हैं, तो definitely they lack so many things actually. मुझे लगता है कि there are different problems that students are facing. It's not the one problem. There's so many problems. आप जब students से interact करते हैं, तो sometimes they have some vocabulary here, they have a lexicon, they have a mental vocabulary, but they don't know how to express themselves in English. फिर कुछ लोगों का मसला ये होता है कुछ लोग ना, वैसे सही कह रहे हैं आप, कुछ रिटन में बहुत अच्छे होते हैं इंग्लिश. बिल्कुल, they good at जितना writing. मर्जी आप लिखवा लें, कोई उनको एक टॉपिक दे दें, आप उस पर लिखते चले जाएंगे. उनसे आप कहें कि इस पे बोल के दिखाओ, तो नहीं बोला जाता. Because they don't have exposure. रीडिंग भी बहुत अच्छी होती है. बहुत अच्छी होती है ना. And I have seen such cases a lot. कैसे केसेस ज़्यादा आपके पास, वो स्पोकन हमारे पास प्रॉब्लम है
रीडिंग के हैं क्या मतलब? अगर हम स्पोकन की बात करें तो इट डज नॉट इंक्लूड रीडिंग एक्चुअली. Okay. When you talk about spoken, so it's primarily revolves around like आपका उसमें speaking आता है, listening आता है, and somehow writing is involved in it. अगर आप international test की बात करते हैं, whether you talk about IELTS, TOEFL, Pearson, CELT का बात करते हैं, Oxford का बात करते हैं, ELT का बात करते हैं. So when you talk about all these international tests, so आपको cumulatively आपको जो है उसका टेस्ट देना पड़ता है 4 skills का. सही. तो उसमें जो है रीडिंग काउंट्स अ लॉट बिकॉज दे वांट टू सी दैट हाउ नर्ड यू आर, हाउ बुकिश यू आर. और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग किताब पढ़ना पसंद ही नहीं करते हैं. आवर यंग जनरेशन, आवर यंगस्टर, दे डोंट लाइक टू गो टू डिफरेंट लाइब्रेरीज to seek knowledge and to gain more exposure. They don't do that normally. तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चों को रीडिंग हैबिट्स नहीं कर. लाइब्रेरीज हमारे यहाँ है भी तो बहुत कम ना. हो भी तो हम नहीं जाएंगे. हमारे सिनेमास हैं, आप जगह जगह आपको कॉफ़ी शॉप्स मिलेंगी, आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, आपको शॉपिंग मॉल्स मिलेंगे. लाइब्रेरी आप बहुत कम है. मुझे लगता है कि वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन. हम अपने बच्चों को वो एटमॉस्फेयर, वो माहौल, वो सेटअप, वो चीज़ें देते ही नहीं है. तो हमारे बच्चे कैसे इस तरह बिल्कुल भी नहीं देते हैं. अब मैं being a linguist and being a language teacher, मैं pronunciation जब सुनता हूँ whenever I move around my place, so I see people when they're talking in English, so sometimes they speak quite hilarious English. I can give you example for this actually. Actually, आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं. हाँ जी. क्योंकि हमारी ये नेशनल टंग नहीं है, ठीक है, इंग्लिश. लेकिन हमारे लोग, जैसे आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं, ठीक है. तो जिस तरह से हम किसी गोरे को, किसी को फॉरेनर को पकड़ लेते हैं, उसे कहते हैं कि तुम उर्दू में, इवन आपका नाम लेके दिखा दे, वो कितनी गलत. हाँ, तो इसी तरह से ये हमारे साथ भी है. हमें ऐसे लोगों को डिस्करेज नहीं करना है. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारे यहाँ जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो एजुकेशन सिस्टम है. ऑनेस्टली फिर देखिए आप, हमारे यहाँ पंजाब में हम लोग तो इस कदर जहनी पस्ती के शिकार हैं कि उर्दू के जो एंकर्स हैं उनको शायद हमें जो पंजाबी के जो हैं, हम लोग पंजाबी स्पीकिंग जितने भी हैं, वो उर्दू स्पीकिंग्स जो हैं वो समझते हैं शायद हम उस तरह से उर्दू बोल ही नहीं पा रहे हैं. ऐसा नहीं है, ठीक है. तो जाहिर है हम अगर पंजाबी बहुत है तो आप पंजाबी बोल के दिखा दे. जाहिर है जब आप पंजाबी बोलेंगे तो आपका भी पता चलेगा कि आप पंजाबी स्पीकिंग नहीं है. ये नेचुरल चीज़ है. ऐसे लोगों को हमें डिस्करेज नहीं करना है. हमें इसी चीज़ को हम ये बोल रहे हैं ना कि हमारे यहाँ बेसिकली मसला जो मैंने आपको बोला है, दैट्स नॉट अबाउट द यंगस्टर. हमारे यहाँ जो यंगस्टर है, द यूथ है, दे वांट टू फ्लरिश, दे वांट टू गेट एक्सीलेंसी इन देयर लाइफ. अब आप देखें कि नाउ इट हैज़ बिकम अ ट्रेंड. People like to learn language because they have they have a horizon to touch. They have lots of dreams to to make them come true. So इसके लिए बच्चे आते हैं हमारे पास, and they are the prodigious, or a number of students, they come to us, visit to us every day. हमारे पास different batches हैं that we are offering even at Arfa, even in different organization that I am associated with. तो बस हमारे यहाँ मसला जो मेन आ रहा है, मुझे लगता है कि वो टीचर्स को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए क्लास के दौरान कि वो इनकरेजिंग हो और वो हम डिस्करेज नहीं करें किसी को भी. और व्हाट आई मेंट टू से इज कि जो टीचर बेचारा पढ़ाता है वो जैसे वो बेचारे वैसे ही सीख रहे होते हैं. तो मुझे लगता है कि we need professional teacher, expert teacher who can diagnose the main problem. I think for me a teacher is like a doctor. जैसे हम IELTS में भी यही करते हैं. This is what we do actually. हमारे पास जब कोई बच्चा आता है, whether he comes for the work visa or he comes for education visa, like हमारे पास जो पढ़ने आते हैं, academic test के लिए आते हैं IELTS में, या work वीज़ा के टेस्ट के लिए आते हैं, और दे माइट कम फॉर स्पाउस वीज़ा कैटेगरी, जिसमें उनको अपने बीवी के पास या अपने हस्बैंड के पास जाना होता है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में. तो हम पहले उनका इनिशियल असेसमेंट करते हैं, एंड वी सी दैट वेयर दे आर where they are lacking and where they are lagging behind. That's really important for us. तो हम उसको पहले analyze करते हैं, and then according to it, we teach the student. We see that, okay, this is the actually shortcoming. And because of this, mashallah, with the God high wealth, we have a wonderful result. We are a result-oriented organization in Pakistan. Although we are the #1 IT institute in Pakistan, but apart from that, we are also, we are striving a lot
to, you know, to produce more good results. Okay. And we always work on students' deficiencies. اور یہ ہونا بہت ضروری ہے. جب تک آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کا پرابلم نہیں پتا, اور میں نے آج کل یہ دیکھا ہے انسٹیٹیوشن میں, سوری ٹو سے, کہ وہ بچے بیچارے کو بولنے ہی نہیں دیتے. If you don't understand any question in your class, so I think students should be encouraged. But they always discouraged. نہیں, آپ ایسے نہیں بولیں, your style is not good, your accent is not good, your pronunciation is not somehow good. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں سبتر کہ ایک اچھے ٹیچر کا ہونا بہت ضروری ہے, انکریجنگ انوائرمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سبتر آپ کے آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. اچھا لگا جی. آج کی مارننگ شو سے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے.